Hello, my dear students. Are you fine? Let's continue our today's topic. Today we will study preparation of carboxylic acid. In last period, in previous lecture, we had completed the common name and IUPAC name of carboxylic acid. In today's lecture, we will study the preparation of carboxylic acid. Preparation, Preparation, preparation of carboxylic acid. Preparation means formation or synthesis. Now there are the number of methods used for preparation of carboxylic acid. Out of them, some are included in our syllabus. तो बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर करने के लिए नंबर ऑफ कई सारे मेथड्स है. आज बेटा उसमें से कुछ मेथड अपने को स्टडी करना है. फर्स्ट मेथड by hydrolysis of alkyl cyanide or amides. Hydrolysis means reaction with water. बेटा वाटर के साथ रिएक्शन, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस. तो बेटा हाइड्रोलाइसिस करना है किसका? अल्काइल साइनाइड का या बेटा अमाइड्स का, और बेटा उससे प्रिपेयर करना है कार्बोक्सिलिक एसिड. नाउ अल्काइल साइनाइड्स आल्सो कॉल्ड एज अल्काइल नाइट्राइल्स. अल्काइल साइनाइड को ही बेटा और क्या बोलते हैं बेटा? अल्काइल नाइट्राइल्स. सो व्हेन अल्काइल साइनाइड और अल्काइल नाइट्राइल undergoes hydrolysis by using dilute HCl. So when alkyl cyanide or alkyl nitriles undergoes hydrolysis by using dilute HCl, first it form amides. Amide again undergoes hydrolysis to form the carboxylic acid. So it means reaction is carried out in two step. इसका मतलब है बेटा रिएक्शन दो स्टेप में हो रही. पहली स्टेप में क्या होगा बेटा? पहली स्टेप में हाइड्रोलाइसिस अल्काइल साइनाइड का डाइल्यूट HCl को यूज करके उससे फॉर्म होगा बेटा अमाइड. अमाइड का बेटा फिर हाइड्रोलाइसिस उससे फॉर्म होगा कार्बोक्सिलिक एसिड. Now see the general reaction. R single bond C triple bond N. It is alkyl cyanide or it is also called alkyl nitriles. So when it undergoes hydrolysis by using dilute HCl, अब बेटे C triple bond है ना, C triple bond N, 2 pi bonds are broken. Oxygen attached with carbon by double bond and hydrogen attached with nitrogen. So compound becomes R single bond C double bond O NH2. R single bond C double bond O NH2. It is called amide. Now in second step, amide again undergoes hydrolysis. Amide का बेटा फिर क्या होगा बेटा? हाइड्रोलाइसिस. हाइड्रोलाइसिस मीन्स रिएक्शन विथ वाटर. अब बेटा ये वाटर की ब्रेकिंग हुई H पॉजिटिव OH निगेटिव. नाउ NH2 कंबाइन विथ H पॉजिटिव टू फॉर्म NH3. NH2 बेटे कंबाइन हुआ H के साथ, फॉर्म हुआ बेटा NH3. नाउ दिस आर C डबल बॉन्ड O कंबाइन विथ OH. R C डबल बॉन्ड O combines with OH to form R C double bond O OH, and this compound is called carboxylic acid. Now here hydrolysis is carried out
by using acid. Therefore this hydrolysis is called acid hydrolysis. Alkyl cyanide undergoes hydrolysis by using dilute HCl. First it forms amides. Amide again undergoes hydrolysis to form the carboxylic acid. Now we will study the example. Now there is no example in our syllabus. In our syllabus only general reaction is there, but we will study along with examples. Chalo, first example, take the example of acetonitrile. CH3 single bond C, triple bond N, it is acetonitrile, or it is also called methyl cyanide. CH3 means methyl, C triple bond N means cyanide, so methyl cyanide. So when acetonitrile or methyl cyanide undergoes hydrolysis by using dilute HCl. Now same reaction, these oxygen attached with carbon by double bond, these two hydrogen attached with nitrogen, so compound becomes CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड ONH2. ये बेटा ट्रिपल बॉन्ड में से दोनों पाई बॉन्ड ब्रेक हुए, बोथ दी पाई बॉन्ड्स आर ब्रोकन. ऑक्सीजन अटैच विथ कार्बन बाय डबल बॉन्ड, टू हाइड्रोजन अटैच विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म द कंपाउंड CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड ONH2, and this compound is called acetamide. ACETAMIDE, acetamide. Now this acetamide again undergoes hydrolysis. acetamide का बेटा फिर होगा बेटा hydrolysis. Hydrolysis means reaction with water. Now this water is broken to form H positive OH negative. These NH2 combine with H to form NH3. CH3 C double bond O combine with OH to form the CH3 single bond C double bond O OH, and this compound is called acetic acid. So when acetonitrile or methyl cyanide undergoes hydrolysis by using dilute HCl, first it forms acetamide. Acetamide again undergoes hydrolysis to form acetic acid. IUPAC name of acetic acid, ethanoic acid. Second example, propionitrile, C2H5 single bond C triple bond N, it is propionitrile, or it is also called ethyl cyanide. C2H5 means ethyl, C triple bond N means cyanide, so ethyl cyanide. So when propionitrile or ethyl cyanide undergoes hydrolysis by using dilute HCl, now these two pi bonds are broken. Oxygen attached with carbon by double bond, these two hydrogen attached with nitrogen. तो बेटे दोनों पाई बॉन्ड ब्रेक हुए, ऑक्सीजन अटैच हुआ बेटा C के साथ, C डबल बॉन्ड O, दो हाइड्रोजन अटैच हुए N के साथ, सो कंपाउंड बिकम C2H5 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड ONH2. दिस कंपाउंड इज कॉल्ड propionamide. Propionamide. Now this propionamide again undergoes hydrolysis. प्रोपियोनाइड का बेटा प्रोपियोनामाइड का फिर होगा बेटा हाइड्रोलाइसिस. हाइड्रोलाइसिस मीन्स रिएक्शन विथ वाटर. नाउ दिस NH2 combine with H positive to form the NH3. Now what will left here? C2H5 single bond C double bond O, and from here OH.
So compound becomes C2H5, single bond C, double bond O, OH. It is called propionic acid. PROPIONIC, propionic acid. IUPAC name propanoic acid. So when propionitrile or ethyl cyanide undergoes hydrolysis by using dilute HCl, first it forms propionamide. This propionamide again undergoes hydrolysis to form propionic acid. Now in this way, hydrolysis of alkyl cyanide is carried out to form the carboxylic acid. And बेटा lastly this ammonia, ये जो बेटा अमोनिया दिखाई दे रहा ना, दिस अमोनिया कंबाइन विथ HCl. अमोनिया बेटे कंबाइन होता है किसके साथ? HCl के साथ, टू फॉर्म द अमोनियम क्लोराइड. NH3 plus HCl, they combines to form NH4Cl and this compound is called ammonium chloride. तो बेटा ये NH3 और ये बेटा HCl, they combines to form ammonium chloride. So in this way, carboxylic acid is prepared from the hydrolysis of alkyl cyanide. Now we will study second method by hydrolysis of acid chloride and acid anhydride. अब बेटा हाइड्रोलाइसिस करना है किसका? एसिड क्लोराइड का और बेटा एसिड अनहाइड्राइड का, और उससे प्रिपेयर करना है कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन विथ वाटर is called as hydrolysis. So when acid chloride and acid anhydride undergoes hydrolysis, then it forms carboxylic acid. Very simple method is there, बहुत simple method है बेटा. चले first of all we will see from acid chloride. Acid chloride, its formula RC double bond OCl, it is acid chloride. So when acid chloride undergoes hydrolysis, जब बेटा acid chloride का बेटा क्या होगा? Hydrolysis. Now see here how reaction is takes place. This water is broken to form the H positive and OH negative. Now this Cl combined with H positive to form the HCl. तो बेटा acid chloride में का Cl और बेटे वाटर में का H कंबाइन हुआ बेटे बना HCl. नाउ व्हाट विल लेफ्ट हियर? RC डबल बॉन्ड O, फ्रॉम हियर OH, दे कंबाइंस टू फॉर्म RC डबल बॉन्ड O OH and this compound is called carboxylic acid. So when acid chloride undergoes a hydrolysis, then it forms carboxylic acid. ठीक है. Now we will see example. First example, CH3 single bond C double bond OCl. It is acetyl chloride. इसका नाम है बेटा acetyl chloride. So when acetyl chloride undergoes hydrolysis, जब बेटा acetyl chloride का बेटा क्या होगा? Hydrolysis. Now this water is broken to form the H positive OH negative. ठीक है. Now this Cl combined with H positive to form the HCl. Now what will left here? CH3C double bond O, from here OH, they combines to form CH3C double bond O OH and it is called acetic acid. So acetyl chloride undergoes hydrolysis to form acetic acid. Second example, propionyl chloride C2H5 single bond C double bond OCl, it is propionyl chloride. So when propionyl chloride undergoes hydrolysis, same reaction, ये बेटा H positive, ये बेटा OH negative,
after breaking of water. Now this Cl combine with H positive to form the HCl. Now what will left here? C2H5, C double bond O, and from here OH. They combines to form C2H5, C double bond O, OH, and this acid is called propionic acid. IUPAC name propanoic acid. So in this way, acid chloride undergoes hydrolysis to form the carboxylic acid. Acetyl chloride undergoes hydrolysis to form acetic acid. Propionyl chloride undergoes hydrolysis to form propionic acid. Right? Now we will study from acid anhydride.